I think last, I think last time we were working on loops, right? For loops, and I had given two questions, but let me show you the solution for one of the question now. So if you want to print out like 1, 2, 3, 4, 5, and then 1, 2, 3, 4, etc. with spaces. Okay, so you will need to use double for loop to one to go over the row numbers and then the other to print out each one of the rows. So for I in range 1 to 6, so we have 5 rows, and then we can do for j in range. So we have to start from 5, right? And then the last row has only one element. So we can either try to do this. It may work. Let's check it. So we start at 5, and then last is not counted, so I guess 0. And step is -1. Let's see if we can do this. Print J. So this is the inner loop is gonna print out. We can't start at 5. We have to start um, at 5 minus I or something like this. So when I equals to 5, we print only one thing. So it's probably +1. And we need to print nothing, so we can basically move on to the next line. And this one, I think the end equals something like this. Let's try. Okay. It's quite similar, but uh, the one I gave was 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, was it? Okay, then we have to think about where to start. It's gonna be 1, and then the ending is gonna be this. Okay, I think I overcomplicated this stuff. Let's just go from 1 to this, and then step will be just 1, so we don't have to include. Okay. So what are we doing here? So for I in range 1 to 6 would uh make you go from 1 to 5 because the last end is not inclusive. So we have 5 rows, and in each row we are printing from 1 till 5 in the beginning, right? However, we also have to basically print less item as our row increases. So I is the row index. So as our I increases, our limit is decreasing. And there's this +2. Okay, there's a +1. The reason for a +1 was because the last index is not included. So we're increasing by 1. But there's this another +1 is because this I is starting from 1. If I was starting from 0, then this +1 would not be needed. So if you were to print out just a number from like 0 to 4 instead, then we can just do this, and it will be 0 to 4 because we're starting at 0. And in depth, what we can do is
think about plugging in the I. So I starts at 1, and then you think about, okay, 5 minus 1 plus 1, that's 5. But 5 is not going to be inclusive, so 1 less, that's 4. So the ending is going to be 4. So whenever this kind of stuff comes, it's really good idea to check, plug the numbers in, right? So the maximum I is 5 here because 6 is not included. So I equals to 5 would be 5 minus 5 plus 1. So we go all the way till 1, but 1 is not included because, again, uh, this last number is not included, then it will be only 0 printed. So that will be the solution. If you want 0 to 4, like this. If you want 1 to 5, then add like this, etc. Let's see chat. This course is Yeah, this is a basic kind of basic course, but on coding in Python. Okay, so that is a solution. I think the other one was just like write the code that sums from 1 to n. So let's write n equals 100. This should be very easy. Let's say initialize the sum as 0. So for I in range, okay, so we go from either 0 to 100 or 1 to 100, doesn't matter, right? Because we're going to add 0. But okay. 1 to n, but if you just do n, it will only add up to 99. So we add 1, and then sum equals sum plus 1. Another way of writing this, I did not show you last time, not to confuse you, but is plus equals 1. Okay. This is a shorthand way of saying sum equals sum plus 1. So we're incrementing this. And unlike C++ or other languages, there is no thing as sum plus plus. That doesn't exist in Python. So you can write this way. Uh, we're not adding 1, we actually should add I because we have to add the number that goes from 1 to n. So, okay. And we get out of the for, and then we just print out our sum. So it will be 50-50. All right. So today we wanna start working on with NumPy. NumPy is whenever you wanna work with numerical stuff in Python, we use NumPy. So usually at the start of the very top of the code, okay? Right now it doesn't matter, but usually at the very top of the code, we write this import statement. So what does it do is there's this library called NumPy, okay? And we are going to use it in our code. So import NumPy as NP. So that means we're going to call it NP because it's shorter to write NP. It's very commonly used. But there's a library called NumPy. Basically, we're like copying this whole thing here. In Python, yeah, import statement also works like this, I think. So it doesn't matter if you have it at the bottom or at the above or below these two, it doesn't really matter. Okay. So what's NumPy? NumPy is what can it do? It can provide you a lot of mathematical functions. Okay, that's the most basic, like sine, cosine, tangent, arctangent, and everything, something like this. But
more importantly, NumPy works with arrays. So what is an array? In math, you know that we use vectors and matrices, right? So arrays is like a one-dimensional array is vector, two-dimensional array is matrix, and three-dimensional, etc., tensor, whatever, with these kind of things are possible. So we can do easy matrix vector or matrix multiplication. These kind of stuff will be very easy. Also, another reason to use NumPy is it's faster than just working with Python lists, faster than just basic lists, and it will be faster than working with for loop. Okay, so let's do some very basic stuff. So how do you create an array? So let's say A is a NumPy array. So we do NumPy array and then initialize with list. Okay, so we can initialize it with the square bracket, means a Python list. So we give it values like 0, 1, 2, 3, 4, etc. And then B, let's say it's another NumPy array. And we initialize this with another vector. I don't have to have spaces. I'm just like adding spaces for visualization. Okay. So now C equals to A plus B. Then so basically now we have like one-dimensional number arrays, and then we can do A plus B. Okay. Now we can check what C is, right? So let's print out C. And you can see that C is 1, 3, 5, 7, 9, etc. So we're adding 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3. So just like adding two vectors, element by element. I think if you try to do like this and then have different number of thing, it will give an error, right? Because you cannot add shape 5 and shape 6. Doesn't work right. So, okay. So there's a lot of different ways to initialize a NumPy array. So for example, this was one example. We give the initial values, but a lot of times we can initialize a NumPy array from 0. Like we can have a zeros vector. So NumPy zeros is very commonly used, and it will give a NumPy array, but the argument inside will be the shape. So you have to give it the shape, okay? So there are several different ways to giving it shape. Let me show you. One dimensional, I think this should just work, right? So if I say A equals to NumPy dot zeros, 3, that means we have 0 array that's initialized with zeros, and it has 3 length. Okay, we can make it 5, but this is still one-dimensional array. Okay, let's go to two-dimensional array. B equals NumPy zeros, and two-dimensional array. When you give the dimension, you have to put this in a bracket. Okay, so this is called a tuple in Python. So anything written in a bracket is a tuple in Python. So for example, let's say we have dimension 2 and 3. So this is tuple. So now let's check how the B is going to look like. See, B is going to be NumPy array 2 by 3. So it has 2 rows and 3 columns.
Okay, let's talk about how to change single element of the B. For example, what we can do is between the after initializing with zeros, let's say this element. Okay, how do you make this element into 5? Okay, now then we need to index into this specific element. So this is, you can see this is the second row, second column. However, in programming, we don't count from one, we count from zero. So it's actually the first row. So 0, 1 row, 0, 1 column. So actually 1, 1. And then we say, let's change this to 5. And now print out the B, show the B. And we have 0, 0, 0, 0, 5, 0, something like this. Let's, for one more example to illustrate, let's change this guy to -3. Okay, so this one will be 0th row, third element. Hmm. Ah, no, second element. So I made the same mistake of counting from 1 here. So it's actually the 0th row, second column, because 0 first, second column. So all right, so that's how you can initialize a NumPy array. NumPy, mm, so basically matrix, NumPy matrix, but it's still an array, it's a two-dimensional array. Okay, so we can do a lot of stuff. If you have same shape of two matrix, you can add, etc. So all these logical things will work. Let me show you another one. So zeros is one of the most common thing, but let's say ones is another common. So we can initialize the same shape of that guy, of that matrix, but with ones. So it's 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Okay, now you may ask, do they have twos and threes and fours and fives? But that's kind of dumb, right? You cannot have such things. So how do you do that? We can just say, let's make everything threes. So we can just say 3 times numpy ones. So this 3 is gonna scale the matrix completely. So we got 3, 3, 3, 3, 3, 3. So now let's do some, of course. Okay, one more thing. Let's show you another type of array, which is numpy I. Okay, so I is gonna give you, yeah, what's it called? Identity matrix. Okay, so let's do D, and you can see we have an identity matrix 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, this kind of stuff. So now using Python, basically you can use it like a matrix calculator. We can do a lot of stuff. Um, we can do dot product between two vectors. X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Let me demonstrate that dot product. So let's say we have A, which is a numpy array, and we have 0, 1, 2, 3. B is a numpy array. 1, 2, 3, 4, doesn't matter. And if you do C equals numpy dot A, B, I think it should work. Okay, so C. Okay.
I'm skipping print because in Jupyter Notebook, if you don't do the print, but just say C, it will show up what value is stored inside this variable. But you can do print. So let's check it, right? Is it true? Is a dot product between A and B vector equal to 20? So 0 times 1 is 0. 1 times 2 is 2. 2 times 3 is 6. So 2 plus 6 plus 12. That is equal to 20. So it works. So NumPy has tons of stuff like this. I cannot show you all of them, but I can show you the most basic ones. So here I'm showing you the basic ones. You can just Google what NumPy has in terms of yeah, and basically this. Okay, so let's do matrix vector multiplication. Yeah, so A equals to now let me show you how you can initialize your own matrix with specific values. So I have a lot of bracket. Okay, well, let me just first write down what I can do. Say 0, 1, 2, 3. So what did I do here? Is basically this is a list of lists, right? So this is basically like nested list. So this 0, 1, this is the row, basically. 2, 3 is one of the row. And then when you combine those two rows, you get the matrix. So let's print it out and see. It's 0, 1, 2, 3. Exactly like we want. So now let's say x equals to NumPy array 2 and 3. So this is just a vector. And I wanna do y equals to a. Now, matrix vector multiplication, you have to use this at symbol, okay, instead of multiplication. So this matrix vector multiplication needs at symbol. Let's print out all of them. Print what's a, print what's x, and then print what's the result, y. Okay. So it's 0, 1, 2, 3, and then we multiply this with 2, 3, and then the final result is 3 and 13. So we can check it. 0, 1, 2, 3. So that's 3. If you do this, 2 times 2, 3 times 3 is 13. So realize here it didn't matter if the x was vertical or horizontal. It assumes it's a vertical vector. But if we actually we can do dot capital T, I think, and it will give you the same result. Wait. What you can do is you can do dot T. You can do it here. You can do it also here. Right? So this will kind of make it transpose this. You can also do dot capital T and transpose the A. So you can see 0, 1, 2, 3 turned into 0, 1, 2, 3. So it transposed this matrix. So dot capital T does transposing. So that let's
dot capital T transpose. So now we can do a lot of different stuff, right? We can initialize a matrix several different ways. We can initialize vector. We can do matrix vector multiplication. Same goes for matrix multiplication. Add symbol is also going to work. And transpose then. Okay, so that is the linear algebra aspect of NumPy. And then you can also solve, do like, you can also solve linear system of equation. So if you have a times x equals to, no, is this? AXB. Yes, I think this, if you have equation like AX equals to B kind of form, you can solve this. Let's try it out. So let's say you have a matrix, okay, another. We initialize this with 2, 3, 4, 5 or something. It's a bit hard to solve, right? Let's do something easy. Let's say it's 0, 1, 1, 0, 0, 1, but I need this brackets to make it two-dimensional. So two-dimensional would basically have like two brackets, right? 1, 0, 0, 1, that is 1, 0, 0, 1. Wait, that is identity. So I want to actually flip it 0, 1, and 1, 0. So let's say A is this, and then X, we have to find X. So we give the B. So B could be equal to, let's say 3 and 5. Some these numbers. X equals to what? How do you solve this? Okay, so we can just Google how this works. Okay, I'll even show you. You can. It's a good skill. So NumPy, lin alg solve. You can already have this. So numpy.linalg.solve is what it solves. So look at this documentation of NumPy. So you will need to use documentation whenever you are doing your own code. So that's why I'm showing you this. Now, what can you do? So we want to use this. Now, one important thing, if you write numpy.linuxsolve, it will not work for us because our numpy is called np. So instead, we have to write np.linalg.solve. Okay. And then if you look at this documentation, it says A is the matrix, X, like, this is the normal X equal to B. So A is the first argument. You put the matrix here. As a second argument, you give the vector, then you find the X. So A is matrix, and then our vector is B. And we have solved it, but let's print out to check if X is correct. And X is 5 and 3. Makes sense, right? Because we have, okay, one more thing. I think you can do this. So it's more easily visible. Basically 0, 1, and 1, 0 times 3, 5. So NumPy always assumes, you can like assume this vector is like vertical, so 3, 5. And if you solve it, you'll get 5 and 3 because you can see this just this matrix just switched the two values. If I had a bit more complex stuff like 1 of the x, 2 of the y, 3 of the x, 5 of the y equals to this, then it will also solve it. It will just give you the answer. And if the matrix don't have determinant, then it will not be able to solve. Oh yeah. If you want,
can print out the determinant of the matrix numpy dot det a. Doesn't have dot det. So then we are numpy determinant. It has to be linalg. So this is how you really code, right? You see some error and what's wrong, and then you go there, Google, and find error. And the determinant of A is -1. So here is the computer is not perfect, right? It's working with floating point numbers, and it's always like approximate. Not sure if you can use change the type, but there is one thing you can do, which is d type equals int is this should change. You can just try it out. Let's see. Nah. Wait, does this work? It seems like it's still not working. Probably because the algorithm only gives you floating point answers. Okay. So you can delve deeper into that. There are other libraries like SymPy, etc., which can give you symbolic problem solving. So instead of just numbers, you can actually solve symbolic equations using SymPy. But this is not super commonly used and a bit complicated to use. But people say this is similar to Mathematica if you have used this, but I am more of a numerical guy, and for me, these approximate answers are always good enough. So that is linear algebra there. Okay, so NumPy can do a lot of linear algebra. You can also use a for loop. With NumPy. So if you have like A equals NumPy array 1, 2, 5 for 5, you can iterate. So yeah, one cool thing about Python is it really reads like English, right? For element in A, print element. Makes sense what you're gonna do. So you have NumPy array, you have 1, 2, 3, 4, 5, and then you're printing out from 1 to 5, etc. Okay, so that is the basics of NumPy. Um, let me just demonstrate you guys some other stuff like NumPy sine of. It's always like in radians, I think. So let's say 2 times NumPy dot pi, right? I think pi would be capital or small. Let's check. Yeah. So you can see NumPy sine of 2 pi gives you -2 blah 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 e to the negative 16. What does this mean? It's basically 0, right? E to the negative 16. And because this is like the error of the floating point, it's basically saying it's 0, but there is some error, a little bit error. So what you can do, if it's half pi, sine of half pi should be equal to 1, right? And you get 1. So NumPy has a lot of useful algorithms. Let me show you another one, NumPy.exponential. It's quite often used, right? We use exponentials. Equal exponential of 1. What does it do? It's just going to do e to the power of 1, right? It's going to print e. So it's 2.72, as you all know, etc. Now, one cool thing about
NumPy is if you have an array and apply this function, it will apply on all the elements. So let me show you. Let's say our array is NumPy dot array. Then we initialize this. Let me show you another useful stuff. Our range. Okay. So this is like a range we were using for, but this just builds a NumPy array. So this again has a start and an end and a step, and you can define only the end or start and the end, or also with the step. So just like the range, you can do several different stuff. So let's say we have this, right? So we can see we have an array going from 1 to 7 with this step 2. 7 not inclusive, that's why it's ending at 5. But if you make it 10, we will have 1 to 9, right? 1, 3, 5, 7, 9. So a range is 1. Another useful one will be linspace, which is more useful when you have floating point division. For example, if you have a ruler of length 10 and you want to divide in million pieces, then it will give you all the points on that exact one. So you will see that will be useful next time. But okay, let me show you how the NumPy functions apply on every single element. Okay, so for example, this is our NumPy array, which is array 1, 3, 5, 7, 9. What happens if we now do b equals to NumPy dot exponential of a? This in NumPy find exponential of all of the elements one by one. Okay, so let's print out a and print out b to examine what happens. So a is 1, 3, 5, 7, 9. B is e to the 1 power, e to the 3 power, which is like 20. And next one is e to the 5 power. That's 148. E to the 7 power, 1096. E to the 9 power is 8,000 something. So you don't have, oh, this makes it such that you don't have to use a for loop to do this kind of calculation. You can just use the function on the whole array and it will just do for everything one by one, element wise. So this applies the function on the array element wise. So each element is exponentiated, etc. So I think that's good enough for today's NumPy. And as homework, please solve some linear equations. Whatever linear equation you have seen at math homework or whatever, math guys, you can easily come up with a linear equation of AXB and use NumPy to solve these and check if the result is correct or not. So next time, next class, I want to introduce matplotlib, which can be used to plot graphs, right? Plotting graphs are super useful in math. So please try to install matplotlib before next class. All right, so that's it for today.
Mr. Bart, uh, can you hear me? Yes. Have you end? What? Have you end the lecture? Yeah, yeah. Okay, thank you very much. We will see next week. Yep. Okay, thank you very much. All right. Bye, everyone. Bye. ओके पार्टिसिपेंट मैं कुछ आप लोगों को जाहिर बात है ये देखना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स मीडिया को या इस लेक्चर को आप लोगों ने कहाँ कहाँ से ज्वाइन किया है तो मैं हर बंदे को वन बाय वन अनम्यूट करूंगा तो आपको काइंडली अपना नेम और यूनिवर्सिटी बता दें ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए। ओके ये शुरू में कुछ डॉट है इनको मैं अनम्यूट करता हूँ आप बता देंगे। जस्ट वन मोमेंट। जस्ट। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम जी। My name is Sonia Akram, and recently I complete my MPhil from University of Gujarat, Pakistan. So now I'm searching fully funded PhD position. वेरी For गुड। it, I apply different of the university in Italy. I also gave interview on different of university, but due to lack of seats, I don't achieve at that time. But I try my best to different of university to get admission in PhD. ओके थैंक यू वेरी मच होपफुली आप जिस कोशिश में लगी हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको वो सीट मिल जाएगी इंशाल्लाह क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो जब अप्लाई करते हैं तो आफ्टर मैनी रिजेक्शंस के एक दिन एक्सेप्टेंस भी मिल जाती है सो बेस्ट ऑफ लक Yes, बेस्ट। sir. Thank you so much. नेक्स्ट है अ, कामल यावर। सॉरी अगर मैं नाम सही तरीके से ना बोल सकूं तो। यस। कमाल कमाल सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम कमाल यावर है। पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मैंने मास्टर्स इन मैथमेटिक्स किया है इन 2021 और इस टाइम मैं एज अ लेक्चरर मैथमेटिक्स पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस शोरकोट में पढ़ा रहा हूँ। Oh, thank you very much. So you are also looking for a PhD position, right? एम फिल। Okay. Thank you very much. So next है थैंक अब्दुल गफूर। Yes. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। गफूर बात कर रहा हूँ सर। मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। मैंने नमल यूनिवर्सिटी से एमफिल किया अभी रिसेंटली और मैंने अभी परसुइंग की है पीएचडी नमल से ही अभी स्टार्ट की है। ओके बेस्ट विशेस बेस्ट ऑफ लक। सो अब्दुल वाजिद को जानते हैं? किसको? आपको अब्दुल वाजिद पढ़ा रहे हैं वहाँ पे? नहीं, अब्दुल वाजिद नहीं पढ़ा रहे। वहाँ अदनान सईद भट्ट साहब हैं और डॉक्टर अनम है, डॉक्टर हादिया, डॉक्टर आसिया। ओके थैंक यू वेरी मच अब्दुल गफूर। नेक्स्ट है आमिर। यस आमिर। आमिर। नो। नेक्स्ट है अमार हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैं आमिर हयात कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पीएचडी अभी स्टार्ट किया रिसेंटली। हम्म। स्कॉलरशिप पे बाकी बाहर के लिए भी कोशिश कर रहे हैं वेरी गुड। और इंशाल्लाह जी चाइना में एक्सेप्टेंस के लिए ट्राई कर रहे हैं। अभी तक तो कोई खास नहीं मिल रहा है, इंशाल्लाह जी ट्राई जी। करेंगे। आप मैथमेटिक्स मीडिया ग्रुप्स वगैरह में रहें हम वहाँ पे स्कॉलरशिप्स डेली सेंड करते रहते हैं जी चाइनीज जी हांगकांग इंशाल्लाह। एवरीथिंग सो प्लीज अप्लाई एवरीवेयर। थैंक यू वेरी मच। ओके। ओके सर नेक्स्ट इंशाल्लाह है थैंक यू। अमार हसन। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या वाल हाल चाल है सर? वालेकुम सलाम जी अल्हम्दुलिल्लाह। Myself, I'm Arisan, and I have done MPhil mathematics in from Lahore Leeds University in 2021, and हम्म। also looking for a PhD position. इंशाल्लाह प्लीज हमारे साथ अटैच रहिए मैथमेटिक्स मीडिया नॉट मैथमेटिक्स मीडिया ओनली एवरीथिंग लाइक मैथमेटिक्स जितने भी ग्रुप्स हैं या पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग है स्कॉलरशिप नेटवर्क है जितने ग्रुप्स हैं वहाँ पर स्कॉलरशिप्स आते रहते हैं सो अप्लाई एवरीवेयर लाइक अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च फील्ड। सो बेस्ट विशेस Uh, आपके लिए भी। नेक्स्ट अब्दुलरहमान सॉरी आपका नाम था जस्ट वन अमार ठीक है। नेक्स्ट है दरैन फातिमा।
यस नरेम फातिमा। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, my name is Darren Fatma. I have recently completed my MPhil in mathematics from Rifa International University, Faisalabad in राइट 2023. Now I am looking for PhD positions in China and in different countries. I have free time. That's why I joined the Python course because it is related to my next research. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Proposal. थैंक यू वेरी मच। तो अप्लाई करते रहें, इंशाल्लाह एक दिन पोजीशन मिल जाएगी। रिसेंटली एक रिफा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से समर शहरीन को पोजीशन मिली है। मे बी यू नो, मे बी वो आपकी क्लास फेलो हो। उसने 2022 में एमफिल मैथमेटिक्स किया फ्रॉम रिफा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। सर वो मेरी सीनियर होंगी। ओके सो ये जस्ट मैं आपको मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ कि वहाँ से स्टूडेंट का एडमिशन हुआ। ओके बेस्ट विशेस। नेक्स्ट थैंक यू है सर। इर्तिजा। यस इर्तिजा। नो इर्तिजा। ओके इफ नॉट नेक्स्ट है हाफिजा मारिया अरशाद। यस इर्तिजा की बात ही हाफिजा मारिया अरशाद। ओके आप भी नहीं हैं। नेक्स्ट किसी ने ज्वाइन किया मोबाइल से इन्फिनिट लर्निंग हब। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अली मजीद है। मैं अभी एमएस की है और पीएचडी के लिए सर्च आउट कर रहे हैं, तो उसी के हवाले से आपको देखा था। आप कहाँ से एमएस किया आपने? एयर यूनिवर्सिटी से सर। एयर यूनिवर्सिटी से। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट है इन्फिनिक्स S4। सॉरी टू से आपने नेम से ज्वाइन किया करें, ये एक अच्छी चीज़ होती है। जब आप इंटरव्यू भी देंगे नेक्स्ट टाइम, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है कि आपके नाम के साथ इन्फिनिक्स S4 या इन्फिनिट या इस तरह से वट एवर जो भी आ रहा है। इन्फिनिक्स S4। नो? इफ यस प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ओके नेक्स्ट चलते हैं इरफान खान। इरफान खान। नो इरफान खान भी नहीं है। जवेरिया। जी जवेरिया। ओके सो यस जवेरिया यस बोलें। My name is Hazel from University of Punjab. मैं आपको सुन नहीं And पा रहा, सॉरी। मेरे ख्याल में आपने कोई हैंड फ्री है, इंटरनेट वीक है, मैं आपको सुन नहीं पा रहा, सॉरी। my name is Julia Zafar from University of Punjab, Lahore. I am a student of BS Mathematics. ओह ग्रेट। आपने लास्ट टाइम पोस्टर भी प्रेजेंट किया था? जी सर। ओके ओके नेक्स्ट हमारे पास है कलीमुल्ला। यस कलीमुल्ला। थैंक यू जुवेरिया। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं? वालेकुम सलाम। जी जी। जी मेरा नाम कलीमुल्ला है, मैं अभी चाइना में हूँ, एमएस कर रहा हूँ। अभी मेरा रिसर्च जारी है, सेकेंड ईयर में हूँ। और पाइथन चूंकि मैंने एडवांस लेवल के लिए ज्वाइन किया था, लेकिन अभी मैं सेकंड ईमेल मुझे आई थी। मैंने सोचा था कि शायद कोई एडवांस लेवल होगा, तो मैं उसमें थोड़ा सा, क्योंकि मेरा रिसर्च जो है ना वो पाइथन में है हम्म। और मैथलैब यूज़ करता हूँ। तो अभी हम्म, बेसिक में चल रहा है। अगर इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा कि आपको ज्वाइन भी करूँ, क्योंकि अ, कुछ बेसिक भी हमसे भूल चुके होते हैं ना, क्योंकि हम हम्म, एडवांस में क्या करते हैं, हम्म। कोड देते हैं फिर हम उसमें चेंजिंग करते हैं, ताकि बेसिक भी मजबूत हो जाए। हम्म। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच कलीमुल्ला। और थैंक बेस्ट विशेस आपके लिए, आपको एक अच्छी पीएचडी पोजीशन मिले। नेक्स्ट हमारे पास यस लर्नर। जी लर्नर। किसी ने अपना नेम लर्नर रखा है? Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। I am Zainab Ijaz. I have done my master's from Lahore College Women in Python research. I have used machine learning
and I am doing as a React developer in a software house. Great. Now I am finding for PhD in machine learning or data sciences because I have a lot of idea about Python different libraries. So I am finding for that. Okay. That's why I joined this Mm-hmm. course because I know about the basic of Python Mm-hmm. and Python libraries of Seaborn, Matplotlib. I have used my research in Python. I am the one of the student in my university that is used Python for my research and work. Okay, I really appreciate your working. So thank you very much. आप मैथमेटिक्स मीडिया, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, मैथमेटिक्स मीडिया वट एवर जो भी आपको लगता है प्लेटफॉर्म जहाँ पे स्कॉलरशिप्स आती हैं, आप वहाँ पर अप्लाई करें। डाटा साइंस में करें, मशीन लर्निंग में करें, डीप लर्निंग में करें, ठीक है। तो ये आपका जो है वो रिसर्च एरिया जो मैंने आपको बताया, तो आप इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको अपना थोड़ा सा सर्कल बड़ा रखें, मतलब जहाँ पर भी पोजीशन आती है वहाँ पर अप्लाई करें। सो बेस्ट विशेज़ हैं। नेक्स्ट है सेम, माय नेम इज़ मोहम्मद जवाद। यस, सॉरी, मोहम्मद जवाद। ओके, आपने नीचे बता दिया आई एम जवाद, डन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम एनईडी। एनईडी से तो मैं मुराद, ओके ये कराची में है, ठीक है। एंड लुकिंग, ओके, थैंक यू वेरी मच जवाद। नेक्स्ट है मोहम्मद इब्राहिम। ओ, मोहम्मद इब्राहिम नो। ओके, नेक्स्ट मोहम्मद कदीर। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। My name is Mohammad Qadir. I completed my graduation from University of Education Lahore, and I am looking for the master scholarship. ओके, सो जो लोग मास्टर के लिए स्कॉलरशिप लुक कर रहे हैं, प्लीज़ वो अभी थोड़े दिनों तक इरास्मस मॉन्टेस स्कॉलरशिप ओपन हो जाएगा, तो प्लीज़ वहाँ पर अप्लाई लाजमी करेगा, क्योंकि पिछली दफ़ा बहुत सारे लोगों का इरास्मस मॉन्टेस पे एडमिशन हुआ है। तकरीबन 30 अक्टूबर को 55 पाकिस्तानी मास्टर स्टूडेंट्स की फ़्लाइट है इटली के लिए। सो अप्लाई इरास्मस मॉन्टेस स्कॉलरशिप्स इन नवंबर में, भी नवंबर में ओपन हो जाए। ओके, थैंक यू मोहम्मद कदीर। नेक्स्ट हम टाइम देते हैं मोहम्मद शुएब को। यस, मोहम्मद शुएब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने बीएस किया है, अभी एमएस में एनरोल हूँ यूआईटी पेशावर में, और ओके। पीएचडी के लिए कोशिश है कि बाहर जाऊँ, मतलब हम्म, स्कॉलरशिप। चलें जी, बेस्ट विशेज हैं आपके लिए। वैसे नेक्स्ट। ये सर ये मेरा फर्स्ट टाइम है ऑनलाइन क्लासेस वगैरह का, और मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके, नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट किसी ने अपना नेम पीसी रखा है, पीसी। यस, ओके, इफ नॉट वी विल गो टुवर्ड राबिया उस्मान। यस, Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। My, myself, Rabi Osman. I'm currently a student of BS Mathematics in University of the Punjab, Lahore, and ओके, searching for a master program. आपका कौन सा सेमेस्टर है बीएस मैथमेटिक्स का? Seventh semester start. सो प्लीज अप्लाई इरास्मस मॉन्टेस स्कॉलरशिप इफ यू कैन। मेरे ख्याल में आप कर सकती हैं अप्लाई, अगर कर सकती हैं तो लाजमी कीजिएगा नवंबर दिसंबर में। और मेरे ख्याल में आपने पोस्टर भी प्रेजेंट किया था, जहां तक मुझे याद हो। जी, लास्ट जो भी वो हुई है ना, हम्म पिछला जो कोर्सेज थे उनमें भी अप्लाई किया हुआ था, तो वो भी लिए हुए इसका हैं। मतलब है मेरी थोड़ी याददाश्त फिर स्ट्रॉन्ग है, मैं पहचान लेता हूँ किन स्टूडेंट्स ने किया था। थैंक यू वेरी मच। ओके, जी, नेक्स्ट जो है वो है सहर असलम। यस सहर। Assalamu alaikum, sir. Sir, I have completed my MS from University of Salgut, and I'm from Salgut, and I'm looking for a course for PhD. ओके, बेस्ट विशेस सहर। थैंक यू वेरी मच फॉर इंट्रोड्यूस। Assalamu alaikum, sir. My name is Sahar. I have ओके, नेक्स्ट तलहा अहमद। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है सर आपका?
जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं तल अहमद में बात कर रहा हूँ सर। 2022 में मैंने अपना एमफिल इन मैथमेटिक्स कंप्लीट किए। तो सर एक पर्सनल क्वेश्चन है, अगर आप माइंड ना करें। सर चूंकि मैं आपके साथ फेसबुक पर भी मैं ऐड हूँ, मेरी आईडी का नेम है तल अहमद मुस्तफ़ाई। तो इस नेम से मैं आपके साथ काफ़ी अरसे से मैं ऐड हूँ, और अक्सर मैं आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं मैं उसमें भी आपके साथ में ऐड हूँ, और आप अक्सर चीज़ें शेयर वगैरह करते रहते हैं। और एक दो पहले भी इस तरह की ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, उसमें भी मैं आपके साथ मैं ऐड रहा हूँ। इमरान असजद साहब मेरे मेंटोर भी हैं और काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी हैं, और मेरे सुपरवाइजर साहब के क्लास फेलो भी हैं। शायद आप जानते हो इमरान असजद साहब को। So please ask your question. Yes. Sir, my question is that what is the title of your MPhil thesis and PhD thesis? Okay. So मेरा जो एमफिल मैथमेटिक्स था वो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से था। सो दैट वाज द ओनली जनरलाइज्ड क्यूरंग फजी लिंग्विस्टिक्स इन डिसीजन मेकिंग, इस तरह से था। और नेक्स्ट जो मेरी पीएचडी है इसका लास्ट ईयर है, इसमें तो मैं अपनी सब रिमानिंग ज्योमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन इन न्यूरो साइंस में कर रहा हूँ पीएचडी। सो अभी तक तो मैंने फिनिश नहीं की पीएचडी, नेक्स्ट ईयर करूँगा। सर हमने भी फजी हमारे भी एमफिल में थी, लेकिन वो फजी ओके वाले कोर्सेज मैंने ओके पिक किए तलहा थे अहमद, मैंने। इट्स टू मच टाइम टेकिंग क्वेश्चन। सो आप मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर लें, फिर मैं वहां पर अगर आपने कुछ इस सर हवाले। आपका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास नहीं है, काइंडली वो आप इस चैट बॉक्स में मेंशन कर दें तो आप फिर मैं आप आपके मुझे साथ। आप मुझे अगर आप ऐड हैं फेसबुक पे तो मैसेंजर पे मैसेज करें, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस। My last question is you to that मैंने ऑलरेडी यही आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह हैं उसमें मैं पहले काफ़ी इन रहता था, लेकिन आजकल मैं जॉब वगैरह भी कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, उस वजह से मैं इतना इन नहीं रह सकता। तो काइंडली जो ये फ्री जो ये मैथमेटिक्स की कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं, लेकिन ये सर्टिफिकेट बेस्ड कॉन्फ्रेंस होती हैं, मैं 4 कॉन्फ्रेंसेस मैंने लिए और उनके सर्टिफिकेट भी मेरे पास पड़े हुए हैं। इसी तरीके से अगर इस मंथ में, अक्टूबर के मंथ में कोई इस तरह की फ्री सर्टिफिकेट बेस्ड कॉन्फ्रेंस अगर आपकी इंफॉर्मेशन में है तो काइंडली यहाँ पर गाइड आउट कर दें। ओके, मैथमेटिक्स मीडिया में अटैच रहें, एवरीथिंग हम वहाँ पे शेयर करते हैं। सो मैं आपको पर्सनली तो नहीं शेयर कर सकता, आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज हम एवरीथिंग जो मेरे पास होती है मैं ग्रुप्स में शेयर करता हूँ, जैसे आप लोग सारे जानते हैं। सो मैं उधर शेयर कर दूंगा। ठीक सर है, ओके सर, जो थैंक्स नेक्स्ट सर। है तैयबा। यस तैयबा, सॉरी, नेक्स्ट तैयबा। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। Myself Tayyiba, and I am final year student of BS Mathematics program in Kailavam University, Nawabshah. ओह ग्रेट, फ्रॉम सिंध, राइट? जी, from ओके, Sindh. बेस्ट विशेस आपके लिए। नेक्स्ट है हमारे लास्ट में जैनब अली। यस जैनब। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। My name is Zainab, and I'm a student of BS Mathematics from Qaida Awam University of Nawabshah. ओह ग्रेट, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच जैनब। एंड लास्ट पे मैं नाम भूल गया जिन्होंने नवाब शाह का बताया, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। देखें, मैं लास्ट पे फिर एक बात कहना चाहूँगा कि सर्टिफिकेट्स के लिए या कुछ इन चीज़ों के लिए अगर आप लोगों ने पढ़ना तो बेशक आप लोग मुझे मेल कर लें, या जो कुछ हम वैसे आपको सर्टिफिकेट सेंड कर देंगे, फिर आपको रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सो द मेन थिंग इज़ कि आप लोग सीखें। अगर आप लोग किसी को ये कह रहे हैं कि मुझे पाइथन आती है तो फिर आपको पाइथन आती हो। जैसे कि हमें लास्ट यहाँ दौरान मीटिंग किसी ने बताया कि मैं चाइना से हूँ, लेकिन वो फिर भी उनको पता है कि ये बेसिक लेवल है तो फिर वो फिर भी सीख रहे हैं। तो
इंसान को सीखते रहना चाहिए, ठीक है। सो द मेन थिंग इज कि आप जब किसी को बताएं कि मुझे पाइथन आती है तो फिर आपको आती हो, ये ना हो कि आपके पास सर्टिफिकेट हो। सर्टिफिकेट से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सो ठीक है, आप लोग ज्वाइन करते रहें। नेक्स्ट लेक्चर, हम फोर्थ लेक्चर में हमारे जो स्पीकर हैं मिस्टर बार्ट, वो बड़े अच्छे तरीके से पाइथन कोर्स को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वो बड़ी हाई क्लास के इंस्टीट्यूट में अपनी जो है वो पीएचडी क्लास पे जा रहे हैं, मिस्टर बार्ट फ्रॉम मैक्स प्लांक जर्मनी। और उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है टीचिंग में हांगकांग से, जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज में आती हैं इन द वर्ल्ड। सो थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने ज्वाइन किया है और अपने साथ इतने सिंसियर हैं कि वो क्लासेस को ले रहे हैं, और उनको इन चीज़ की जो है वो टेंशन नहीं है कि वो उनको जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर काफ़ी लोग हैं वो हमें काफ़ी देर से जो है वो फॉलो कर रहे हैं, लाइक वो पोस्टर कंपटीशन वगैरह में एवरीथिंग। तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। चलें ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग सेम टाइम पे वेडनेसडे को हम इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय, अस्सलाम वालेकुम।